Very good morning to all. So, till now we have discussed in chapter number 2, that is in atomic structure, regarding Bohr's model for hydrogen atom. Then we have discussed explanation of the line spectrum of hydrogen. So, there are some limitations of this Bohr model which leads to some more generalization. ठीक है, so Bohr model के कुछ limitations की वजह से हमें जो है we have a lead towards the quantum mechanical model of the atom. So before starting this, the quantum mechanical model of the atom, we have to discuss some topics today. Then we will start with quantum mechanical theories, models of the atom. So, as we have discussed, the limitations of the Bohr models are like it fails to account for the finer details or doublet, that is too closely spaced lines of the hydrogen atom spectrum. When we have studied hydrogen atom spectrum, उस केस में आपके पास जो थी very closely spaced line थी जिनको हमने doublet कहा. So this model is failed to explain this, why these doublets appear here. And second thing is, it could not also explain the ability of the atoms to form molecules by chemical bond. Means it is Bohr model again fails to explain that what is that ability of the atom, they so that they are forming molecules by chemical bonding. So we can say that as these points are mentioned, I have discussed now, this needs a better theory which can explain the more advanced features of the structure of the atoms. So there is a need for another theory, that is quantum mechanical model of the atom. Now, in the view of shortcomings of the Bohr model, there are some attempts were made to develop more suitable and general model for atoms, and two important developments which contributed towards this are: first, the dual nature of matter, and second is Hinsberg uncertainty principle. Means कि इससे पहले कि हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में स्टडी करें, we have to discuss these 2 points regarding, that is dual behavior of matter. Till now we have discussed dual nature of the electromagnetic radiations. Now we will discuss that dual behavior of matter also. जो matter है, it is also behaving like a wave as well as particle. And the second is Hinsberg uncertainty principle. So let's start with dual behavior of matter. Now, according to this, that matter also has dual nature just like that of electromagnetic waves. That is, lambda is equal to h by mb, where h is Planck's constant and mb, you know that it is mass into velocity is equal to p, that is momentum, and lambda is here wavelength. So in 1924, de Broglie proposed that matter, just like the radiation, also exhibiting the dual behavior, that is, it is also behaving as a wave as well as particle. So it means that it must, if it is behaving like a wave, it must having some wavelength, and if it is a particle, it must have some mass, and it is moving, as we know that electron is moving, hence it must possesses some velocity, that is lambda is equal to h by mb. Again, I'm repeating, if electron behave as a wave, then it must have a wavelength lambda, and if it is behaving like a particle, it means it must have some mass. As we know, electron is a moving particle, hence it must have some velocity. So in this matter, how we can conclude this relation, that is lambda is equal to h by mb. So he just said, de Broglie just said that all the moving particles have dual nature. All the moving particles have the dual nature. So we will just discuss it later on more perfectly, you can say that. So this dual nature is where this m is the mass of the particle, v is the velocity of that, and p is its momentum. So his prediction was confirmed experimentally,
when it was found that an electron beam undergoes diffraction. तो अब उन्होंने तो hypothesis दे दिया that this electron is a particle as well as a wave, लेकिन बाद में experimentally जो था ये prove हो गया कि electron reality में एक wave की तरह है, because it has clearly complete the experiment of diffraction. जब इसके ऊपर डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट किए गए तो सक्सेसफुली वो हमारे पास रिजल्ट आए जो कि सिर्फ एक वेव दे सकती है. तो अगर इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली दिया, उसके रिजल्ट पॉजिटिव थे, तो व्हाट डज इट मीन कि इलेक्ट्रॉन इज आल्सो अ वेव. Now this fact जो था has been put to use in making an electron microscopic. कि ये जो था सिर्फ माइक्रोस्कोपिक केसेस में ही पॉसिबल था. क्यों भाई, ऐसा क्यों, व्हाई इट हैपेंस सो? बिकॉज एज यू कैन सी फ्रॉम दिस रिलेशन, अगर हमारे पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें, लाइक अगर हम हैवी ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो उस केस में अगर मास बड़ा है हमारे पास, if mass is greater than, what is the effect on the lambda will be less. तो जिनका ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उस केस में हमारी जो लैम्डा है इट इज गेटिंग मोर एक्सट्रीमली लेस, वो बहुत ज्यादा जो है छोटी हो जाती है, दैट वी कैन नॉट that it is not possible to recognize these kinds of wave having such a small wavelength. So that is the reason that this is applicable to only microscopic particle and not to macroscopic particle. तो ये जो हमारा पूरा इक्वेशन है, इट इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड नॉट टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल. द रीजन इज because in case of macroscopic particle मास यहाँ पे ज्यादा होगा और प्लैंक्स कांस्टेंट जो है यहाँ पे h आपको उसकी पता है, उसकी वैल्यू थी 10⁻⁻34 में, सो वो भी नेगेटिव में है. so lambda is getting very very extremely small, hence we cannot recognize such a waves with extremely small wavelength. So this is all about the dual behavior of matter. No, just try to explain this with the help of these two example. अगर हमारे पास कोई बॉल है, let us consider its mass is to be 0.1 kg and having velocity 10 meter per second. So this is a macroscopic particle. Okay, so according to de Broglie equation, that is lambda is equal to h by mb. Here h is Planck's constant and m is given 0.1 kg and velocity is again given here. So when we calculate it, we will get this lambda, the value of lambda is this much. So जस्ट यू इमेजिन कि कितनी छोटी वैल्यू जो है ये वेवलेंथ की है. अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻24 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम जो होती है बहुत स्मॉल वैल्यू होती है. सो ऑलरेडी स्मॉल वैल्यू की भी कितनी पावर हो जाएगी, इट इज 10⁻⁻24. ओके, सो मीन्स इस केस में जब हमने एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया, बॉल जो है ऑब्वियसली मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो उस केस में आपका जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे अब अगर बॉल की बात करें, क्रिकेट बॉल की, तो हम बोलने को तो हम कह रहे हैं कि जितने भी मूविंग सब्सटेंस है दे आर आल्सो बिहेविंग लाइक अ वेव. तो बॉल जो है हमें पार्टिकल की तरह क्यों दिख रही है, वेव की तरह क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ इतनी कम है कि वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ वेव, बट वी कांट डिनाई कि इसकी वेवलेंथ है ही नहीं. वेवलेंथ है but it is very very small. And just in another case, if you are talking about an electron, the mass of an electron is this, and if its kinetic energy is this one, calculate its wavelength. So kinetic energy is equal to half mv square from and from this value we can find out here the value of v. So by putting all the values we get here lambda, that is 896.7 nanometer. Now nano means 10⁻⁹. So इलेक्ट्रॉन के केस में फिर भी आपकी जो वेवलेंथ है इससे कहीं ज्यादा है. सो इलेक्ट्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. सो इस केस में हमें फिर भी रिकॉग्नाइजेबल जो वेवलेंथ हमें मिल रही है, हेंस इलेक्ट्रॉन इज अ वेव एज वेल. नो डाउट जो हमारी बॉल है वो भी एक वेव की तरह है, बट इट इज unrecognizable as a wave because a ball has a recognizable mass due to which its wavelength is very very less.
The next very important that we have discussed in first slide, कि अगर हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम अगर वी हैव टू स्टडी, सो उससे पहले ये दो टॉपिक जो है हमें क्लियर करने हैं कि ऐसा क्यों है, इसकी किन टॉपिक्स की वजह से है जो हमारा नेक्स्ट वी नीड another modified theory to understand the structure of the atom. So first we have discussed here the dual behavior of matter, and then now next we will discuss Hinsberg uncertainty principle. So what is this principle? It is just to locate an electron, you might strike it with a photon. अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, हम उसको क्या करेंगे, फोटोन के साथ स्ट्राइक करेंगे. नो द इलेक्ट्रॉन हैज सच अ स्मॉल मास दैट स्ट्राइकिंग इट विद अ फोटोन अफेक्ट्स इज मोशन इन अ वे दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली. अब इलेक्ट्रॉन का मास जो है इतना कम होता है कि जब एक फोटोन जो है हाई एनर्जी का उसको स्ट्राइक कर रहा है, सो हम उसकी पोजीशन या मोशन को accurately predict नहीं कर सकते. And the very act of measuring the position of the electron changes its momentum, making its momentum uncertain. ठीक है. So अगर मान लेते हैं कि हमें उसकी पोजीशन को पता है कि इलेक्ट्रॉन की ये फिक्स पोजीशन है, then it is impossible for us to find out its momentum. Now let us discuss this in more detail about your uncertainty principle. Now ये जो डी ब्रॉगली थे, he is the student of Niels Bohr. So he has discussed just the dual nature of electron as well. Now we will start with uncertainty principle. So according to this principle, if any particles show wave nature, अब इन्होंने क्या किया, हिंसबर्ग ने, ये सारा ग्रुप था सभी साइंटिस्ट का, तो अब एक नई इन्वेंशंस की तरफ नए सबका दिमाग चल पड़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है इट इज आल्सो बिहेविंग एज अ वेव, तो सारे उसकी तरफ जो है प्रैक्टिकल्स करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे. सो अनदर साइंटिस्ट दैट इज हिंसबर्ग, he is I think also the colleague of the डी ब्रोगले. सो व्हाट इज अब उन्होंने जो डी ब्रोगले ने कहा था, दैट इज इफ एनी पार्टिकल शो वेव नेचर, इट मींस इट इज माइक्रोस्कोपिक एंड इट इज मूविंग. So simultaneously and accurately we cannot find its place and momentum. Means हम इसका जो मोमेंटम है और उसकी पोजीशन है बिल्कुल एक्यूरेटली एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते. और वी कैन से दैट द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ द position and momentum of moving microscopic particle is impossible. The accurate and simultaneous determination of microscopic particles momentum and position is practically not possible. So just try to understand this. So उनके अकॉर्डिंग क्या था ये कि मान लीजिए अगर हमें किसी पार्टिकल का मास पता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी भी पता है, उसका मोमेंटम भी पता है, देन इट इज डैम श्योर कि हम उसकी पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते. और इसको रिवर्स कर लो कि अगर हमें उसकी पोजीशन पता है तब उस in that case we can't tell what is its momentum, right? So just to understand this, तो उन्होंने अब ये कुछ एक्सपेरिमेंटल हमें वैल्यूज दिए, यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए कुछ, that is so in German Hinsberg, a German physicist, in 1927 stated uncertainty principle, which is the consequences of dual behavior of matter and radiation. So it says that it is impossible to determine simultaneously एक साथ the exact position and exact momentum or velocity of an electron. So mathematically this can be written as delta x. Now what is delta x here? Delta x is just uncertainty in the position and this is uncertainty in the momentum. Uncertainty means error, कि कितना error हमारे पास आएगा, ठीक है. So उसको हमने delta x दे लिया और error in momentum को we have taken here delta p. So when we find the product, that is error in position and error in momentum को जब हम multiply करेंगे, it is always greater and equal to
h by 4 pi, where h is the Planck's constant. So in other words, this P can be written as mv. So delta x into delta mb greater than equal to h by 4 pi. So इस तरह से हम इसको इधर ले आए, delta x into delta vx greater than equal to h 4 pi m. Okay. Now where delta x is the uncertainty in the position and delta px or vx is the uncertainty in the momentum or velocity of the particle. If the position of the electron known with a high degree of accuracy, means अगर हमें पता है, बिल्कुल पता है, let us consider कि हमें अब इसकी वैल्यू पता है कि डेल्टा x की, सॉरी, फर्स्टली वी विल कंसीडर कि हमें डेल्टा p की वैल्यू पता है. डेल्टा p इज व्हाट? What is delta p here? Delta p means error in momentum. कि हम मान लेते हैं error in momentum जो है वो जीरो है, हमें पता है, बिल्कुल पता है कि error in momentum जो हम जीरो है यहाँ पे, ठीक है. So what does it mean? कि जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे अगर आप पुट करो, means we have to find out delta x. तो अगर आपने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, या फिर पहले आप इसको यहाँ ले आइए, ठीक है, डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है हमें. तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h by 4 pi into delta p. So if delta p is 0, delta x is what? It is infinity. But is means पोजीशन में कितना इनफाइनाइट एरर आ जाएगा कि जिसको हम पता भी नहीं लगा सकते, means we can't find it. So अगर हमें उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम पता था, so we have considered that let it be 0. So अगर हमने उसको यहाँ पे इस रिलेशन में पुट किया, तो then we are getting here delta x is equal to infinity. That is error in position जो है infinite times है कि हम उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे. Just reverse of that, मान लीजिए we have delta x is very small, that is हमें पता है उसकी degree of accuracy इतनी है, that is कि उसकी जो एरर है हमारे जीरो एरर्स है, हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता है कि डेल्टा एक्स पोजीशन क्या है उस पार्टिकल की, वी नो दैट. तो अगर हमें पक्का से उसकी पोजीशन पता है, इट मींस डेल्टा एक्स जीरो, मींस क्योंकि डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है एरर इन पोजीशन. तो एरर का तो सवाल ही नहीं है अगर हम उसकी पोजीशन को मतलब 100% श्योर है कि इसकी पोजीशन यही है, तो एरर तो जीरो ही होगा. सो इफ योर एरर इज जीरो एंड वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट द मोमेंटम हियर, सो क्या होगा, डेल्टा एक्स इधर चला जाएगा. सो इफ एरर आर जीरो इन केस ऑफ पोजीशन, सो डेल्टा पी इज अगेन इन्फिनिटी. देन मोमेंटम के केस में जो है आपके, वो आपके एरर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा कि वी कैन नॉट फाइंड इट. So the light used must have a wavelength smaller than the dimensions of electron. So इसको एक explain करने के लिए उन्होंने just कहा है कि how can we explain it with the help of simple example. So just to understand this, let us consider we just want to measure the thickness of sheet of a paper. ठीक है, हमें जो है थिकनेस फाइंड आउट करनी है एक शीट ऑफ पेपर की, और हम क्या यूज कर रहे हैं, हम एक मीटर स्केल यूज कर रहे हैं, जो स्केल होता है हमारे पास. तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली रिजल्ट में कोई एक्यूरेसी नहीं होगी. क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि शीट की जो थिकनेस है वो इतनी कम है कि वो स्केल में हम नहीं जो है फाइंड आउट कर सकते. सो व्हाट डज इट मीन, टू ऑब्टेन द एक्यूरेसी we need an instrument that is graduated in very very smaller units than the thickness of the sheet of the paper. तो हमें एक ऐसी graduated scale चाहिए जिसके जो scales हैं, जिसकी वो graduated हैं, जो कितने हो थिकनेस, जो जितनी एक्चुअल शीट की थिकनेस है उससे कम graduated scale हो. Only then we are able to get the accuracy in its thickness. So we must use a meter stick calibrated in units of smaller than the dimensions of electron if this same thing is applied to the find out the position of the electron. Understand? So to observe an electron, we can emulate it light or electromagnetic radiation. So as I have discussed in previous one कि इलेक्ट्रॉन की उसको फाइंड आउट करने के लिए हम उसको किस चीज से स्ट्राइक करा रहे हैं, फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से. So the light used must have the wavelength smaller than the dimensions of the electrons.
So in this way, momentum of photons such as p is equal to h by lambda could be change energy of electrons by collision. So this is all about your uncertainty principle, and now it's turn to understand its significance. इसकी significance क्या है हमारे कि उसमें. Okay, so this is your Heisenberg uncertainty principle, the product of momentum error into error in position is greater than equal to h by 4 pi, that we have discussed this expression right now. If delta x is 0, then delta p is infinity. Hence, we cannot find its momentum and velocity. If delta p is very small, means it is almost about to be 0. So in that case also we cannot measure डेल्टा एक्स, क्योंकि उस केस में जितना ये स्मॉल होगा ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा एरर हो जाएगा कि हम उसको फाइंड नहीं कर सकते. एंड इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी. दिस इज जस्ट एन फ्लो चार्ट to explain how it is not possible to find out the simultaneously accurate values of momentum as well as position for any moving microscopic particle. Now, significance of the uncertainty principle. Now, in our daily life, this principle has no significance because we come across only with large objects. So the object which we can observe with naked eye without altering their पोजीशन. तो डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल का कह रहे कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास हम सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं और उनके मोशन को जो है देख सकते हैं. सो द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटरमिन्ड एक्यूरेटली बिकॉज इन दीज केसेस द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मेजरिंग डिवाइस, द चेंजेस इन पोजीशन एंड वेलोसिटी आर निग्लिजिबल. सो उनकी इंटरेक्शन जब हो रही है आपस में और ऑब्जेक्ट की और मेजरिंग डिवाइस के साथ, तो वो चेंज इन पोजीशन और वेलोसिटी जो है जो निग्लिजिबल है, क्योंकि वो बड़े बड़े जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं. जबकि स्मॉल केस में यही जो चेंजेस हैं ये बहुत मींस छोटे से चेंज को भी हम बड़ा लेंगे, क्योंकि वी आर देन टॉकिंग अबाउट हियर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. तो मैक्रोस्कोपिक के पार्टिकल्स के केस में हमारी ये डेली लाइफ में जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई भी यूज नहीं है. सिर्फ जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. दैट इज इट इज नॉट पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. So now, the effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for the motion of microscopic object and is negligible for that of macroscopic objects. So this can be seen from the following example. So with the help of example, we are just going to try to understand this. If uncertainty principle is applied to an object of mass that having 10 raised to power minus 6 kg, okay, then we have to find out the uncertainty. So this is your uncertainty principle. Delta B into delta X is equal to, ये बेटा आपको I think I hope you understand, यहाँ पे delta P in delta X into delta P होता है. P को we can write down MB हमारा यहाँ M यहाँ आ गया, और यहाँ here we are left with delta B into delta X, that is error in position and error in velocity. This is Planck's constant. 4, the constant number 4, this is a here we find just put in the value of pi, and mass is given here, that is 10 raised to power minus 6 kg. So when we have find this, it comes out to be 10 raised to power minus 28. Now just for the sake of comparison, we again finding out for another, that is for electron. So the value of delta V and delta X obtained is extremely small and is insignificant. क्यों insignificant है?
it, as you can see here, it is 10 raised to the power minus 28, such a small value. Okay, minus 28. So the value of delta V and delta X obtained here is very, very small. Therefore, one may say that in dealing with milligram sized or heavier object, the associated uncertainties are hardly of any real consequences. But if you are talking about microscopic object, अगर हम microscopic objects की बात करें, in that case, like अगर हम electron की बात करते हैं, so delta V delta X obtained is much larger, and such uncertainties are of the real consequences. For example, mass of electron, we all know that that is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. So according to uncertainty principle, delta V into delta X is equal to h by 4 pi m. So this is Planck's constant, mass of the electron, value of pi, that is 3.14. So we have just, when we have just plug in all the values, we are getting here 10 raised to the power minus 4 meter per meter square per second. So as you can see here, this is the value of delta V and delta X that we are getting here. This is, so it is now 10 raised to power minus 8, so which is a very, very large in comparison to the previous value, that is 10 raised to power minus 28. Okay, so this is so large as compared to the previous one. So therefore it means that the precise statement of the position and momentum of the electrons have to be replaced by the statements of probability, and that the electron has at a given position and momentum. So this is what happens in the quantum mechanical model of the atom. So next we will proceed with just so in this lecture we have just discussed the two things mainly, that is dual nature of the matter and then Hinsberg uncertainty principle. So हमें ये पता लग गया कि ये जो हमारा uncertainty principle है, it deals with only with the microscopic particles and not with the macroscopic particle. So here we have now two numericals to calculate the mass of a photon with wavelength 3.6 angstrom. हमें मास फाइंड आउट करना है फोटोन का, एंड लेमडा इज गिवन हियर. सो लेमडा हमें पता है, लेमडा इज इक्वल टू h बाय mb. सो हमें अगर मास फाइंड आउट करना है तो m इज इक्वल टू h बाय लेमडा b. h प्लैंक्स कांस्टेंट, लेमडा आपको दिया हुआ, दैट इज 3 into 10 3.6 in angstrom. Angstrom means 10 raised to the power minus 10 meters. So we have just put in all the values and we are getting here mass 6.135 into 10 raised to the power minus 29 kg. In this way we have calculated here the mass of the photon where wavelength is given. So by using the relation h is equal to lambda by mv, h is equal to, this is de Broglie, at lambda is equal to h by mb. I will write here lambda is equal to h by mb. So in this case we have to find out the mass. तो हमने mass को जो है इधर shift कर दिया और इस lambda को इधर लिया, ठीक है. That is h is equal to lambda b. So बाकी all the values given here. By calculating these mathematical calculations we are getting here, this is the mass of the photon. So just see this numerical here. A golf ball has a mass of 40 grams and a speed of 45 meter per second. Golf ball है, उसका mass given है, speed given है. If the speed can be measured within accuracy of 2%, अगर हमें जो है 2% की accuracy के साथ हम speed को जो find out कर सकते हैं, then calculate the uncertainty in its position. Means accuracy सिर्फ 2% की, 100% की नहीं है. So in this case, the uncertainty in the speed is 2%, that is 45 into 2 by 100. स्पीड तो यहाँ गिवन है, दैट इज 45 मीटर पर सेकेंड. अब उसकी एक्यूरेसी भी दी है 2%, तो आपकी ये आ गई. व्हेन वी हैव सॉल्व दिस 45 into 2 by 100 0.9
because 45 into 2 is 90, 90 by 100 is 0.9 meter per second. So now using the equation, this is equation for uncertainty principle, because we have to find out the uncertainty in the position, that is, it is uncertainty in the position means delta x we have to find out. So this is delta x is equal to h by 4 pi m delta v. This is Planck's constant. Value of pi is 3.14. Mass, here is mass. So mass is given, that is 40 grams. So 40 grams into kg की बात करें तो kg में 10 raised to the power minus 3 kg. So this is your delta V, 0.9 meter per second. So by calculating, we are getting here delta x, that is 1.46 into 10 raised to the power minus 33 meter. So this is nearly 10 raised to the power 18 times smaller than the diameter of a typical atomic nucleus, as mentioned earlier for large particles. The uncertainty principle sets no meaningful limit to the precision of measurement. So कह रहे हैं कि इतनी कम वैल्यू हमें मिली है, इतनी कम, that is it is 10 raised to the power 18 times smaller than the diameter of a atomic nucleus. एटॉमिक न्यूक्लियस आप मानते कितना स्मॉल होता है न्यूक्लियस किसी भी एटम का, उसके न्यूक्लियस से भी 10 raised to the power 18 टाइम्स स्मॉलर ये डेल्टा एक्स जो है हमारी वैल्यू आई है. सो as we have discussed earlier, that for large particles the uncertainty principle is meaningless. Okay, so this is all for today. I hope you enjoy this lecture. This is very interesting one. So thank you students. Solve these questions, practice them. Till now, happy learning.